Very good morning, students. I hope you all are good and doing great in your studies. So today we are going to do our chapter 8, which is AI domains. So without wasting any further time, let's dive into the chapter. The name of our chapter is AI domains, and the topics we will discuss in this chapter are data science, that means data for AI, natural language processing, NLP, and computer vision, which is C. Now we have an activity which says, with the help of internet, search about new development in AI in the following areas, and you have to write 2-3 lines about them. तो हेल्थ केयर में AI का क्या डेवलपमेंट हुआ है? हेल्थ केयर में हुआ है that it can help in early disease detection. Second, we can write helps in analyzing medical images, medical images and patients' data. Third, we can write in this is personalized treatment plans. And in terms of education, if we talk about AI, so it provides, first is personalized AI is automate grading and saves time of teachers. And the third one can be help students to progress in their own pace. Now, artificial intelligence AI simply एक ability होती है of a machine to act as intelligent as humans. ये directly show करती है human intelligence as identifying picture, understanding voices or observing the real world problems and come out with a solution intelligent. So machine learning, deep learning, data science, computer vision, natural language processing, etc. ये सब कुछ different domains होते हैं of artificial intelligence. These are different components with which जो AI system है वो work करता है. Let us learn about these domains. So AI domains हमारे पास कौन कौन से हैं? 3 main important domains होते हैं of AI, which are data science, natural language processing and computer vision. डेटा साइंस क्या होता है, विच इज डेटा फॉर एआई? तो डेटा साइंस एक एरिया होता है ऑफ एआई जो डील करता है विद डेटा सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस. तो इन दिस एरिया जो सिस्टम है वो गैदर करता है लॉट ऑफ डेटा, मेंटेन करता है डेटा सेट्स एंड extrapolates meaning from the data. Decision can be made based on the data science extracted information. डेटा होता क्या है? डेटा इज ऑल अराउंड अस इन द फाउंडेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो जो इंटरनेट है ऑफ थिंग्स विच इज आईओटी एंड सेंसर्स, उनके पास ये एबिलिटी होती है टू हार्नेस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा, while artificial intelligence can learn patterns in the data to automate tasks for a variety of business benefits. तो डेटा साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है टू अट्रैक्ट नॉलेज और इंसाइट्स फ्रॉम डेटा. AI doesn't work without data. AI जो है वो बिना डेटा के कोई काम कर ही नहीं सकती. ये कंज्यूम करती है डेटा in order to learn. Big data refers to a massive set of data that are now available for this purpose. ये जो set of data है वो हम analyze कर सकते हैं by machines, and this can reveal patterns and trends and facilitate making future predictions. These data sets come from a variety of sources. ये जो data sets है वो variety of sources से आते हैं, public or private. There is a simple and enormous amount of data available for all types, and this include images, audio and
contextual data. एग्जाम्पल्स क्या है एआई एप्लीकेशंस के जो डेटा पे बेस्ड होती हैं? तो एआई हेल्प करता है मार्केटर्स personalize and target email content को identify topics to use and to analyze the result of content marketing campaigns. AI can be used to predict upcoming customer orders. AI की मदद से आप upcoming customer orders को predict कर सकते हो for the next season. This will give retailers the ability to better engage in inventory planning and purchasing and to predict and control cost. The software controlling autonomous vehicle feature work with and control radar systems, lane control features, accident avoidance features, cameras, GPS, and much more. Much of this technology is AI based and relies heavily on the data to function. AI software can be used for product testing, including the creation of simulations, and it can be used to predict maintenance needs and cost. There is a question, name any two domains of AI. So two domains of AI है data science and the another one you can choose computer vision. Now IBM Watson एक AI टेक्नोलॉजी है जो मदद करती है फिजिशियंस को क्विकली आइडेंटिफाई करने के लिए की इंफॉर्मेशन इन अ पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड to provide a relevant evidence and explore treatment options. It takes in a patient's medical record, then provide its evidence-based and personalized recommendations fueled by information from a curated collection of 300 plus journals, 200 textbooks, and 15 plus pages of text, which give doctors instant access to a wealth of information personalized to the patient's treatment plan. तो when being to adapt AI, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स डिस्कवर करते हैं दैट उनका जो डेटा है इन मैनी डिफरेंट फॉर्मेट्स दे नीड टू कन्वर्ट द डेटा, उनको डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ कॉमन फॉर्मेट एंड इम्पोर्ट इट टू अ कॉमन सिस्टम जहाँ पे इट कैन बी यूज टू बिल्ड मॉडल्स इन द फ्यूचर, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसलेट करते हैं डेटा को इनटू elevated employee productivity, optimized supply chains, and next generation customer experience using the power of AI. For example, Amazon. उसको पता है that what customers are going to buy before they go anywhere near the logout, thanks to predict analytics and tons of customer data. Data analytics and artificial intelligence possible करते हैं to link data to gain insights on customers, grow the business, and optimize the speed and quality of logistics. So you need to be able to transform any data you collect into useful information, otherwise it will more likely to just waste resources and even more complexity. Facing the challenges. So regardless of the source of your data, बहुत सारे challenges involved होते हैं in aggregating data that is relevant to the business problem, analyzing it and then gaining insights from it for several reasons, including first is it's not easy to figure out what kind of data is needed. यानी कि हमें किस टाइप का डेटा नीडेड है ये फिगर आउट करना इज वेरी टफ. वर्किंग बैकवर्ड्स फ्रॉम अ प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व, आपको ये डिटरमाइन करना होता है कि किस टाइप का डेटा आपको चाहिए, किस टाइप का डेटा आपको गैदर करना है. कंपनीज आर नॉट ऑलवेज श्योर अबाउट व्हाट दे नीड और हाउ टू गेट दैट इंफॉर्मेशन. Then you need specialized expertise to build the algorithms. Algorithms को build करने के लिए आपको एक अच्छी expertise की requirement होती है. Once you have the data, जब आपके पास एक बार data आ जाता है तो आपको determine करना होता है best attributes for the data model and एक algorithm build करना होता है that effectively answer your business questions. Next is data training is never ending process. You need to constantly add new and updated information. आपको अपने एल्गोरिथम को इम्प्रूव करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें कंटिन्यू अपडेशन करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली उसको एक न्यू अपडेट प्रोवाइड करना पड़ेगा to improve it, get better insights and more accurately predict outcomes. There is a lot of knowledge available in your internal as well as external sources of data, and to best unlock that knowledge, you have to consider the type of data you need. So where to look for it, how to get it, and how to build the right data models to analyze your business questions. And just as importantly, you need to continually update your data to retain and enhance the algorithms. कंप्यूटर विजन एक फील्ड होती है ऑफ कंप्यूटर साइंस जो फोकस करती है ऑन एनेबलिंग कंप्यूटर्स टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल इन इमेजेस एंड वीडियोस.
तो दस कंप्यूटर विजन डिमॉन्स्ट्रेट करता है एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू गैदर एंड एनालाइज विजुअल डेटा बिफोर मेकिंग प्रिडिक्शंस अबाउट इट। यहाँ पे प्रिडिक्शंस बनाने से पहले हमें क्या करना होता है, कंप्यूटर विजन डिमॉन्स्ट्रेट करता है एक एबिलिटी को किसी भी मशीन की टू गैदर एंड एनालाइज द विजुअल डेटा। Computer vision का goal is not only to see but also process and provide useful results based on the observation. For example, computer create कर सकता है एक 3D image from a 2D image in cars and provide important data to the car or the driver. For example, cars should be fitted with computer vision which would be able to identify and distinguish objects on and around the road such as traffic light, pedestrians and traffic signs, and the car driver can act accordingly. Now, intelligent device could provide inputs to the driver or even make the car stop if there is sudden obstacle on the road. When a human who is driving, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग जब ड्राइव कर रहा है एक कार को, वो किसी को देखता है सडनली मूव इनटू द पाथ ऑफ द कार, द ड्राइवर मस्ट रिएक्ट इंस्टेंटली। ड्राइवर जो है वो इंस्टेंटली रिएक्ट करेगा एंड इन अ स्प्लिट सेकेंड ह्यूमन विजन हैज कंप्लीटेड अ कॉम्प्लेक्स task, that of identifying the object, processing data, and deciding what to do. Computer vision's aim is to enable computers to perform the same kind of task as humans with the same efficiency. Limits क्या होती है कंप्यूटर विजन की? थैंक्स टू डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन हैज बीन एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ डिटेक्टिंग एंड क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट्स इन इमेजेस एंड वीडियोस। इनफैक्ट जो डीप लर्निंग है वो एबल है टू एक्सीड ह्यूमन परफॉर्मेंस इन इमेज classification. However, despite the terminology that is suggestive of human intelligence, neural network function in a way that is fundamentally different from the human mind. ह्यूमन विजुअल सिस्टम रिलाई करते हैं ऑन आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स जो 3D मॉडल पे बेस्ड होते हैं और जो हम बिल्ड करते हैं इन आवर माइंड्स। वी आर ऑल्सो एबल, हम लोग एबल हैं टू ट्रांसफर नॉलेज फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर। फॉर इंस्टेंस, इफ वी सी अ न्यू एनिमल, अगर हमें कोई न्यू एनिमल दिखता है फॉर द फर्स्ट टाइम, हम क्विकली आइडेंटिफाई करेंगे सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स फाउंड इन मोस्ट एनिमल्स जैसे नोज, ईयर्स, टेल एंड लेग्स। तो डीप न्यूरल नेटवर्क्स के पास कोई नोशन नहीं होता ऑफ सच कॉन्सेप्ट्स एंड वो डेवलप करते हैं अपनी नॉलेज ऑफ ईच क्लास ऑफ डेटा इंडिविजुअली। एट द हार्ट, न्यूरल नेटवर्क्स जो है दे आर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स जो कंपेयर करते हैं बैच ऑफ पिक्सल्स टू इन एवरी इंटीग्रेट वेज। So this is why they need to see many examples before they can develop the necessary foundations of to recognize every object. Accordingly, neural networks can make stupid and dangerous mistakes when not trained properly. ये हमारा एक ह्यूमन विजन सिस्टम है जहाँ पे हमारी जो आई है वो सेंसिंग डिवाइस रिस्पॉन्सिंग फॉर कैप्चरिंग इमेजेस ऑफ द एनवायरनमेंट। ब्रेन इंटरप्रेटिंग डिवाइस है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर अंडरस्टैंडिंग द इमेज कंटेंट, बोल, ऑरेंजेस, बनानास, लेमन्स एंड पीचेस। नाउ कंप्यूटर विजन सिस्टम में ये हमारा इनपुट है, ये हमारा एक सेंसिंग डिवाइस है, ये इंटरप्रेटिंग डिवाइस है और हमें आउटपुट में ये मिलेगा। In China, many stores are now using facial recognition technology to provide smoother payment experience to customers and instead of using credit cards या फिर mobile payment apps, कस्टमर को क्या करना है, सिर्फ अपना फेस दिखाना है to the computer vision equipped camera and learn about advantages as well as disadvantages of this feature from this thing. Now, computer vision applications. Here are some uses of computer vision applications. पहला होता है facial recognition. तो facial recognition programs होते हैं जो यूज करते हैं computer vision का to recognize individuals in photographs, rely heavily on this field of study. Facial traits जो होते हैं in photos are identified by computer vision algorithms which then match those aspects to stored face profiles. In order to verify the identity of the people using customer electronics, face recognition increasingly being used. Facial recognition is used in social networking applications for both user detection and user tagging. For the same reason, law enforcement uses face recognition software to track down criminals using surveillance footage. सेल्फ ड्राइविंग कार्स डेवलपमेंट जो है सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स का वो रिलाई करता है कंप्यूटर विजन पे टू मेक सेंस ऑफ विजुअल इनपुट्स फ्रॉम अ कार, कैमरास एंड अदर सेंसर्स। तो ये इसेंशियल है टू आइडेंटिफाई अदर कार्स, ट्रैफिक साइंस, लेन मेकर्स,
pedestrians, bicycle, and all of the other visual information encountered on the road. So जो self driving car है, it can steer its ways on streets and highly avoid hitting obstacles and safety drive its passengers to their destination. Augmented and mixed reality. So augmented reality जो allow करती है computers को जैसे smartphones and wearable technologies to superimpose or embed digital content into real world environment also relies heavily on computer vision. Virtual items may be placed in the actual environment through computer vision in augmented reality equipment. In order to properly generate depth and proportions and position virtual items in the real environment, augmented reality apps rely करते हैं computer vision techniques पे to recognize surfaces जैसे tabletop, ceiling and floor. Google Translate let users point a smartphone camera at a sign in another language and almost immediately obtain करता है translation of sign in their preferred language. Modern smartphones use facial recognition algorithms to unlock themselves. Facebook use करता है facial recognition को to detect users apply tags in photographs you post online. In many countries जो retailers है वो अब प्रोवाइड कर रहे हैं फेशियल रिकॉग्निशन पेमेंट टेक्नोलॉजी को, रिलीविंग देयर कस्टमर्स ऑफ द नीड टू रीच इनटू देयर पॉकेट्स. Healthcare. Computer vision has contributed significantly to the development of health tech, automating the process of looking for malignant moles on a person's skin या फिर locating indicators in an X-ray or MRI scan is only one of the many applications of computer vision algorithms. Amazon Go Store. Amazon ने रिसेंटली अपना एक ओपन किया है पब्लिक द Amazon Go Store, जहाँ पे जो शॉपर्स हैं दे नीड नॉट वेट इन अ लाइन, उनको लाइन में वेट करने की जरूरत नहीं है इन द चेकआउट काउंटर टू पे फॉर देयर परचेजेस. Located in Seattle, Washington, the Go Store is fitted with cameras specialized in computer vision. जो टेक्नोलॉजी है जो इसके पीछे रन करती है बिहाइंड द गो स्टोर, उसको हम बोलते हैं जस्ट वॉकआउट. तो शॉपर्स एक्टिवेट करते हैं अपना iOS या फिर एंड्रॉइड मोबाइल ऐप बिफोर एंटरिंग द गेट ऑफ द स्टोर. कैमरास जो है वो प्लेस करे जाते हैं इन द सीलिंग अबव द एसईज एंड ऑन शेल्व्स यूजिंग कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी. एंड जो कंपनी वेबसाइट है वो क्लेम करती है दैट दीज कैमरास कैन डिटरमाइन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम अ शीट एंड हु हैज टेकन इट. इफ एन आइटम इज रिटर्न टू शेल्फ, अगर वो आइटम शेल्फ पे रिटर्न हो गया है, the system is also able to remove that item from a customer's virtual basket. Network of cameras allow करते हैं ऐप को to track people in the store at all times, ensuring it builds the right items to the right shopper when they walk out. Now, without having to use facial recognition, shoppers are free to walk out of the store once they have their products. The app will then send them an online receipt and charge the cost of the products to their Amazon account. In 2016, Spanish banking group BBVA introduced a new way of signing up for their services. New customers could get a bank account within minutes by uploading a photo. यानी कि जो न्यू कस्टमर्स थे उनको अपना बैंक अकाउंट मिल गया था within minutes by uploading a photo of their ID and a selfie. BBVA utilized computer vision technology to analyze the photos. नंबर 26 एक ऑनलाइन बैंक है बेस्ड ऑन जर्मनी, वो ऑल्सो वर्क करता है सिमिलर टेक्नोलॉजी पे. गॉस सर्जिकल इज प्रोड्यूस अ रियल टाइम ब्लड मॉनिटर जो सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स इन accurate blood loss measurement during injuries and surgeries. So the monitor comes with a simple app. Monitor एक simple app के साथ में आता है जो यूज करता है algorithm जो एनालाइज करता है पिक्चर ऑफ सर्जिकल स्पॉन्जेस to accurately predict कि how much blood was lost during the surgery. तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये सेव कर चुकी है अराउंड $10 billion in necessary blood transfusions every year. Microsoft Project Inner Eye is developing a tool. वो एक tool develop कर रहा है जो use करता है AI to analyze three-dimensional radiological images. and जो technology है potentially it can make the process 40 times quicker and suggest the most effective treatment. There is an activity जहाँ पे how does rock, scissor and paper game work.
तो कंप्यूटर क्या करता है, ट्रैक करता है कंडीशनल पॉसिबिलिटीज को ऑफ यू पिकिंग ईच ऑफ द थ्री ऑब्जेक्ट्स given you. The computer always pick the object that beats the one that it thinks you are the most likely to choose. Now, rock paper scissor एक हैंड गेम है जो यूजुअली दो जनों के बीच में खेला जाता है, जहां पे ईच प्लेयर साइमल्टेनियसली फॉर्म करता है वन ऑफ द थ्री शेप्स विद एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, यानी कि रॉक सीजर्स एंड पेपर। और ये जो शेप्स है रॉक सीजर पेपर, गेम बेस्ड होता है ऑन डेटा फॉर एआई, जहां पे मशीन ट्राई करती है टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट मूव ऑफ द पार्टिसिपेंट, एंड इट इज अ रेप्लिका ऑफ बेसिक रॉक पेपर एंड सीजर गेम, जहां पे मशीन ट्राई करती है टू विन अहेड बाय लर्निंग फ्रॉम द participants previous moves. And the link for this is this, and there are three images available on the screen, rock paper and scissors respectively. Click on a particular image to choose one out of the above. Computer will choose its image 2 and score will be set accordingly. ये जो सिस्टम है ये लर्न करता है टू आइडेंटिफाई पैटर्न ऑफ अ पर्सन्स बिहेवियर बाय एनालाइजिंग देयर डिसीजन स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर। While computer won't win all rounds, computer सारे rounds नहीं win करता over time, but ये learn करता है एक personal behavior characteristics को to perform better than the previous chance. See how does the machine react if they make move in a specific pattern, make move randomly. So in a similar way आप इस app को try कर सकते हो on Google Play, rock paper scissor with artificial intelligence. एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं कंप्यूटर विजन के? फॉलोइंग आर सर्टेन एग्जाम्पल्स विच आर वेल स्टैब्लिश्ड एक्टिविटीज यूजिंग कंप्यूटर विजन। फर्स्ट आता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो फर्स्ट क्लासिफाइंग इमेज इनटू कैटेगरीज, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में then utilize this information to search for and catalog instances of the desired class of images. So in manufacturing industries इसको हम include कर सकते हैं for finding defects on the production line or locating broken equipment. ऑब्जर्वेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, इफ एन आइटम इज डिस्कवर्ड, अगर कोई आइटम डिस्कवर होता है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम लोकेशन। कॉमन मेथड फॉर डूइंग दिस इज बाय using a live video stream or a series of sequentially taken photos. For example, driverless cars must not only identify and categorize moving things like people, other motorists and road system in order to prevent crashes and adhere to traffic regulations. कैटेगराइजेशन ऑफ इमेजेस, कंप्यूटर प्रोग्राम जो यूज करता है इमेज कैटेगराइजेशन, वो डिटरमाइन करता है कि व्हाट एन इमेज इज ऑफ, यानी कि कोई डॉग, बनाना, ह्यूमन फेस एक्सेट्रा, एंड इन particularly it may confidently assert that an input picture matches a specific category. So it might be used by a social networking platform, for instance, to filter out offensive photos that people post. रिट्रीवल ऑफ इमेजेस जो बेस्ड होता है ऑन देयर कंटेंट, तो इन कंट्रास्ट टू ट्रेडिशनल विजुअल रिट्रीवल मेथड्स which rely on metadata labels, एक कंटेंट है based on recognition system employs computer vision to search, explore, retrieve pictures from huge data warehouse जो based होता है actual image content पे. Automatic picture annotations which can replace traditional visual tagging may be used for this work. कंप्यूटर विजन बेनिफिट्स, कंप्यूटर विजन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो कंप्यूटर विजन कैन ऑटोमेट सेवरल टास्क विदाउट द नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन। एज ए रिजल्ट ये प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशंस को नंबर ऑफ बेनिफिट, better product and services. तो computer vision systems that have been trained very well वो commit करते हैं zero mistakes and this will result in faster delivery of high quality products and services. Faster and simpler process मतलब जो computer vision systems है वो carry करते हैं repetitive and non मोनोटोनस टास्क को एट अ फास्टर रेट, जो सिंप्लीफाई करते हैं वर्क फॉर ह्यूमंस। कॉस्ट रिडक्शन, यानी कि कंपनीज डू नॉट हैव टू स्पेंड मनी ऑन फिक्सिंग देयर फ्लॉड प्रोसेसेस बिकॉज कंप्यूटर विजन विल लीव नो रूम फॉर फॉल्टी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कंप्यूटर विजन डिसएडवांटेजेस, देयर इज नो टेक्नोलॉजी विच इज फ्री फ्रॉम फ्लॉज, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें कुछ फ्लॉज नहीं हो, विच इज ट्रू फॉर कंप्यूटर विजन सिस्टम्स, एंड हियर आर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ दिस कंप्यूटर विजन। पहला आता है लैक ऑफ स्पेशलिस्ट। कंपनीज को क्या चाहिए? टीम चाहिए ऑफ हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स विद डीप नॉलेज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एआई वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग टेक्नोलॉजीज, ताकि वो अपने कंप्यूटर विजन सिस्टम्स को ट्रेन कर सके। एंड दिस इज अ नीड फॉर मोर स्पेशलिस्ट दैट कैन हेल्प शेप दिस फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी।
नीड फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग मतलब कंप्यूटर विजन सिस्टम्स जो है वो कुछ टेक्निकल ग्लिच या फिर ब्रेक डाउन को फेस करते हैं एंड दिस कैन कॉज इमेंस लॉस टू कंपनीज। हेंस जो कंपनीज है उनको क्या चाहिए, एक डेडिकेटेड टीम चाहिए ऑन रोड टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट दीज सिस्टम्स। नाउ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी ये कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर साइंस का, ह्यूमन लैंग्वेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम यूज करते हैं in machines to understand, analyze, manipulate and interpret human languages. Natural language processing applications जो होती है वो enable करती है यूजर को to communicate with the system in his own words directly. NLP को क्या चाहिए, इसको कुछ ट्रेनिंग डेटा चाहिए for the computer to learn from. For example, if you are building a chatbot, अगर आप कोई chatbot बना रहे हो, एक archive of the actual conversation between your chat and agent and customers will be ट्रेनिंग सेट फॉर द चैटबॉट। तो चैटबॉट ट्राई करेगा टू मेक मीनिंग आउट ऑफ दीज कॉन्वर्सेशंस, फाइंड पैटर्न्स एंड यूज इट आंसर फ्यूचर क्वेश्चंस ऑन इट्स ओन। तो टिपिकल ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन बेस्ड होता है ऑन एनएलपी माइट गो एज फॉलोज। ह्यूमन सेज समथिंग टू द मशीन, machine captures the audio, the captured audio is converted to text, text data is processed, processed data is converted back to audio, and the machine plays an audio file in response to the human. So these are कुछ numerous uses of natural language processing. First is chatbot use करते हैं NLP को to understand human queries and respond. Earlier Google search use करता है just to parse text and now it tries to interpret what one NLP. सेंटीमेंट एनालिसिस मोस्टली यूज किया जाता है ऑन द वेब एंड सोशल मॉनिटरिंग। ये हेल्प करता है टू एनालाइज द एटीट्यूड एंड इमोशनल स्टेट ऑफ द राइटर। वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सिरी, एलेक्सा, दे हैव so good at NLP that one feels person. टेक्स्ट फ्रेजिंग इज अ कॉमन प्रोग्रामिंग टास्क जो स्प्लिट करता है गिवन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को इनटू स्मॉलर पार्ट्स बेस्ड ऑन सम रूल्स। Things were not the same in the early years when lots of trials were being done. Funny incident which is on the internet collected in 1999. कुछ साइंटिस्ट हैं, they were testing a program that could translate from English to Chinese and back again. They fed into their computer the English phrase out of sight, out of mind, and out come some Chinese ideograms. Since none of the scientists in the room at the moment knew Chinese well enough to determine कि जो computers Chinese translation है वो capture hook कर रही है spirit of the English phrase, they fed the ideograms back into the computer, the translation back into English read invisible idiot. Now, daily life NLP examples. There are mainly common practical applications of NLP in our everyday lives beyond conversing with virtual assistants जैसे Alexa, Siri. Here are few more examples. So, have you ever looked at emails in your spam folder? आपके जो email में spam folder है वहां पे आपने कभी emails देखी है और कुछ similarities notice करी है in the subject lines? It use Bayesian spam filtering, एक statistical NLP टेक्निक होती है ये जो कंपेयर करती है वर्ड्स को इन स्पैम टू वैलिड emails to identify junk mail. Have you ever missed a phone call and read the automatic transcript of voicemail in your email box or smartphone app? That speech to text conversation एक NLP capability होती है. Have you ever navigated a website using built-in search bar or by selecting suggested topic, entity or category tags? There is a question, write any one example where all three domains are integrated. So find this answer with the help of internet. Now let's revise the chapter. AI divide होता है into three domains: data science, natural language processing and computer vision. AI doesn't work without data, costumes data in order to learn. Data science is a multidisciplinary field जो यूज करती है साइंटिफिक मेथड्स को, प्रोसेसेस को एंड एल्गोरिदम्स को एंड सिस्टम्स को टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज एंड इनसाइट्स फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। कंप्यूटर विजन एक फील्ड होता है ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ट्रेन करता है कंप्यूटर्स को टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द विजुअल वर्ल्ड। द ह्यूमन विजुअल सिस्टम रिलाइज ऑन आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट, तो बेस्ड है 3D मॉडल पे एंड दैट वी बिल्ड इन आवर माइंड्स. We are also able to transfer knowledge from one domain to another. Computer vision play करता है एक important role in augmented and mixed reality. Technology enables computing devices such as smartphones, tablets, smart glasses
to overlay and embed virtual objects on real world imagery. One field that has seen remarkable progress thanks to advances in computer vision is facial recognition. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक सबसेट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हेल्प करता है मशीन्स की comprehend, interpret, and manipulate natural languages used by humans like text and speech. Let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct answer. Which of these is not a domain of AI? ULP. Dash technology will be used to track player movement in tennis. Computer vision. So the application which is not of computer vision is 3D human organ reconstruction. Which company has a product Alexa virtual assistant? Amazon. Example of natural language processing is chatbots. Next is true false. NLP proves to be quite useful in voice text messaging and virtual assistants. True. TV is more dependent on deep learning. True. Self-driving cars use computer vision to examine their surroundings and plan in its space. True. Augmented reality lets you combine computer-generated atmosphere into real-world atmosphere. True. The spell check feature in word processor is based on NLP. True. Let's do fill in the blanks. Dash game is related to data, spoon, paper, and Dash is an AI technology जो help करता है physicians को to quickly identify key information in a patient medical record to provide relevant evidence and explore treatment options. IBM Watson. Computer vision is more dependent on machine learning. And Dash game is related to NLP, text based. कोई भी adventurous game हो सकता है जो NLP से related हो. Facial recognition is an example of computer vision. So students, this was your complete chapter about AI domains. I hope the chapter is clear to you. Do revise your chapter once again and also learn the exercise. I will see you in your next chapter with the next video. Till then, take care. Bye bye.